भाई बस मुझे ये दिक्कत है कि 1200 यूरो तक क्या फ्राइड लिवर अटैक और इंग्लैंड गैम्बिट पे वह गेम ले जा पाऊंगा। देखना है। वही पॉज करते हैं। अच्छा ये भी बहुत हो रहा है ना। चलो। So good morning guys, good evening, welcome back to another brand new live stream. This is Mr. वाले ट्रिपल नाइन। अरे कितने कंटे के VPS आ रहा है, अभी सही हो जाएगा नेट, अभी कोई दिक्कत नहीं, बेटर अच्छी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हाँ नेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहेगा, इस तो फिर टेक केयर करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम बस जैसी स्ट्रीम कर रहे हैं। चलो आज हम जाएंगे। ओह वी गॉट अ डायमंड प्लेयर, लेट्स प्ले E4। सिसिलियन खेल लूँ? आती नहीं है मुझे। I know to learn Sicilian, I don't remember. We can play Scandi or we can play let's go for this. Ray Lopez क्या खेलोगे? Scotch. Scotch or Ray Lopez? Which one? Ray Lopez! Okay. For Ray Lopez opening, what I have learnt is you just develop your bishop. Okay, he develop his knight. And we can actually kick this bishop out. But we will first castle. Develop a knight. No biggie at all. No biggie. Actually, if he take this, he takes this knight. I think if he take this, अगर ये लेता है तो this is only defender that I have, right? यहाँ से लूँगा फिर वो यहाँ ले लेगा. Idle goes. Okay. So first we will put our pawn structure to avoid that. यहाँ से मैं ये ले लूँगा अगर वो चेक देता है तो, क्योंकि we'll castle king side only, so no biggie at all. Now we can castle. And we have to kick this bishop as well. So first we'll put a bishop here. If it doesn't take, रूई लोपेज है तो थोड़ी सी खतरनाक है, वो थोड़े डिफेंसेस जानने पड़ेंगे इसके क्या होते हैं. He took, so only one way to take back, and this file is open for a rook. Okay, he transfers to a Scotch. We can take this, he takes this, I take this, he takes with the queen. I take this, he takes with the knight. Or there is some sack here. नहीं, और मैं ये लेता हूँ, वो ये लेता है. If I push this pawn, he should take, right? हाँ, तभी यहाँ हार रहा हूँ. And he can take from. I had only one defender, right? इसी में ट्रेड हार रहा हूँ.
I did take this because this will take with a queen. Queen active, queen को मैंने active नहीं करना है. That I just stops, doesn't stop pinning, does he? Are you fucking serious? He forced me to put isolated double pawns here. There's a bishop sack. Yeah, good move. Wait, I can just take the knight, right? तो वो ये pawn भी ले लेगा ना? The knight cannot escape as such. बच सकता है. नाइट ले के मैं pawn पे अटैक कर रहा हूँ, फिर वो बिशप से यहाँ लेता है तो कोई ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं. क्योंकि मैं किंग से ले ही लूँगा वापस, तो let's just take the knight for now. और बिशप से लेता है तो मैं बिशप ले लूँगा उसकी. The sack. Alright, he decided to come back. But we can take this pawn. क्या खा गया भाई वो? नाइट खा गया क्या? नाइट इज अंडर अटैक. बिशप भी अंडर अटैक है. Ooh, what a save, brother. Counter fork. मुझे ये पहले कर देना चाहिए था. भाई बट बड़ा तगड़ा खेल रहा है भाई, बहुत तगड़ा खेल रहा है. From where is he? Brazil. Oh damn.
I have a sack idea actually. My bishop is looking at this pawn to sack itself. भाई अच्छा खेल गया वो. Some games are not easy, bro. आज ज़्यादा देर तक नहीं खेलूँगा, बस एक दो मैच खेल के ख़त्म कर रहा हूँ मैं. My दिल goes Come on, bro. Come on, bro. What I'm gonna do is I'm gonna take his knight so that I can put my bishop here and my queen here and just do a checkmate. That's it. Over and out. Alright. Just took the pawn. We'll take the bishop. That's no big deal. We can save the rook or we can, yeah. I think this is forced, right? But this guy has saved his knight. Now we can just execute our plan. But the bishop will be hanging at this point. So let's take care. Okay. Let's hope we're double attacking. Check is not a problem. He has to save his queen. Okay. Let's take the knight. Should I take with the queen? No, it's fine. Uh, uh, uh. Don't think I blundered, bro. That ain't easy, bro. This ain't easy. Grabbing candies. एंड गेम भी तो जाना है. हाँ मेरे पे एक बिशप भी का एडवांटेज भी तो रहेगा.
can swing a rook up. Wait, let us first take this free candy. यहाँ चेक नहीं ले सकता. Attacking my rook again. He going for draw? Yeah, he's probably is. He went for draw. So irritating when I don't take the queen, right? Italian? First have I heard of that? Yeah. I got my own attack up my sleeve, bro. What the fuck? You just took it? If it doesn't take, what else should I do? I don't have a move if it doesn't take, right? Hmm. Now I don't know what to do. Take. Let's move a queen here. Let me think. We can put a pony there. Nah. A pony here and take this pawn. The queen here and win a discovered attack. मैं गलत moves कर रहा हूँ ट्रक्स इसकी, but I don't know really know.
इसकी कैसलिंग की राइट चली गई हैं, ये बिशप ओपन में है। और वो यहाँ वापस आ सकता है। क्वीन यहाँ नहीं ला सकता, क्वीन यहाँ ला सकता है वो, तो मैं ये पॉन खेलूँगा। अटैकिंग माय अनप्रोटेक्टेड नाइट। नाइट खाता है तो फिर मैं ओके, और बिशप कैन टेक दिस राइट। ओह दिस इज पिन राइट। आई एम स्टक इन अ वेरी बैड पोजिशन एक्चुअली। इसका रिव्यू करना पड़ेगा यार, और ट्रक से लेना पड़ेगा। इससे कोई फायदा नहीं, बिशप ले लेगा। And I can't even attack this pawn because this bishop is there ना। It's forced. I think this is mate. Truck release counter attack नहीं हो पाया यार। नेट काम नहीं कर रहा, क्या हो रहा है? हाँ नेट ही काम नहीं कर रहा है एक्चुअली आज। पानी कितना पीना पड़ रहा है, बंदे ने हरा दिया मुझे। इसमें तो अच्छा खासा चल रहा है, इस दल्ले में क्या दिक्कत है? ड्रग्स अच्छे से ले लिया।
अच्छा क्वीन सपोर्ट दे रहा था मुझे भाई, मैं इसको क्यों दे रहा हूँ? तो C2, C2। ओ अच्छा। पैसे लेने पड़ेंगे इसके लिए। टा 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 टा। बट अगर वो लेता नहीं तब क्या? आया। अबे यार रिव्यू ही नहीं आ रहा, डर मुंह से गाली निकल पाएगा मेरे। हाँ। ये मेट नहीं है। यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, ये नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता। ये तो मेट है। अच्छा यहाँ यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, दिस इज अ मेट राइट। ऑफ कोर्स दिस इज अ मेट। वो मेट नहीं था।
अच्छा नाइट खा सकता है वो, है ना? ओके। वे यार ये तो हो ही नहीं रहा एनालिसिस इसका। सस्ता डायमंड है भाई, पैसे खर्च करो डायमंड, बाकी साइड से देखना पड़ेगा। इस पे तक लोड हो रहा है भाई। इनके सर्वर कभी कभी काम नहीं करते ना। ब्रिलियंट। ओए सिग्मा मिल गया मुझे, लेट्स गो। अच्छा पॉन पुश करना था मुझे, अगर वो ले लेता तो फिर बढ़िया तो खेला रहा मैं, बट तल्ला बेंचोद हो जा। भाई आज दिन नहीं मेरा शायद, है ना? मेरा ये टेस्ट भी नहीं हो रहा। अगर वो लेता नहीं है तो क्या करना चाहिए? सर्वर कैसे लोड नहीं होगा देखता हूँ मैं भी। यार आज इसका एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, सर्वर ही काम नहीं कर रहा है भाई इनके। एक्चुअली नेट ढीला पड़ रहा है मेरा। यूट्यूब में देखना पड़ेगा। ले That's how you defeat the most popular opening of your opponent, g5, going after your weak pawn on f7. You play d5, you play a much trickier knight to d4. Here your opponent may wish to push the pawn forward to free up his bishop and to renew the threat to your king. But you walk into his threat, you just play queen takes d6. Now he'll be tempted to grab the pawn with a fork to your queen and rook, but you stay cool and just move the queen away. Out of that, he happily grabs your rook, thinking that he's just winning the game, but here is the moment when you start your counterattack. Queen takes g2 attacks the rook. The only square for the rook available is rook f1, but here comes queen e4. This time is check to his king. He counters it by bishop e2, thinking that he's safe, but he finished the game in style with knight to f3. That's how you defeat the most popular opening of that. He happily grabs your rook, thinking that he's just winning the game, but here is the moment you don't recapture, but instead you play d5 to close the diagonal for his bishop, and after he takes the pawn, you don't recapture, but instead you play a much trickier knight to d4. Here your opponent may wish to push the pawn forward to free up his bishop and to renew the threat to your king, but you walk into his threat, you just play queen takes d6. Now he'll be tempted to grab the pawn with a fork to your queen and rook, but you stay cool and just move the queen away.
Out of that, he happily grabs your rook, thinking that he's just winning the game, but here is the moment when you start your counterattack. Queen takes g2, attacks the rook. The only square for the rook available is rook f1, but here comes queen e4. This time is check to his king. He covers it by अच्छा, अगर वो बिशप किसी को क्वीन से कवर करता है तभी वो चेकमेट ही है ना? bishop e2, thinking that he's safe, but he finished the game. ये भी बढ़िया है. Alright, we developed the knight, hit the pawn, he got this line. You must take with the bishop, not the knight. And once the king moved, you must put the bishop on d5 so that way you guard the pawn, and then you're threatening the fork. He took, now we take back, his knight is under attack. You must take, and he's playing the Traxler counter attack. Here's how you refute this line. You must take